Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about Austro-Prussian War of 1866. This war was very important event in the European history in which Prussians defeated Austria in a decisive defeat, and they conquered the Austrians in that particular war and established their hegemony in Europe after that. And Austrians were totally kicked out from the German affairs, and Prussia emerged as the only, you can say, empire which could talk about the German Confederation, Germany's unification, or talk about the German affairs. So basically, this war is also known as 7 Weeks War and also called as Austro-Prussian War, which was fought in 1866. And it was a war between Prussia and, on the other side, Austria, along with their allies, like, for example, Austria, Bavaria, Saxony, Hanover, and certain minor German states on the other. It ended in a Prussian decisive victory, which meant the exclusion of Austria from Germany and from the German affairs. So Austria was no longer remained a powerful state which could talk about the German affairs. So the idea was actually the unification of Germany. In 1866 campaign was a carefully planned stage in the unification of Germany under Prussia, of which Otto von Bismarck was the principal actor. So I told you before in the previous lecture as well that Bismarck was the principal actor in the unification of Germany, and he actually planned all these campaigns, whether it was French war later on or this Austro-Prussian war. Prussia deliberately challenged Austria for the leadership of the German Confederation. So it was just an attempt to provoke Austria और उनको गुस्सा दिलाना और उनको अपनी तरफ attract करना ताकि वो जंग में आए. Previously, Prussia had challenged Austria in 1850. 1850 में एक बार उन्होंने attempt की, but they could not get success because they were not ready militarily, they were not organized at that time. So हुआ ये कि but the complete failure of its mobilization in that year compelled the acceptance of almost of these of somewhat humiliating terms of Austria. So basically 1850 में ये हुआ कि they could not mobilize quickly, जिसकी वजह से उनको ऑस्ट्रिया की जो टर्म्स थी उनको मानना पड़ा और that campaign was failed totally. But this time they were ready. Since then, Prussia with Bismarck as statesman, ये उनके key leaders थे जिन्होंने ये सारी planning की उस time पे. Count Helmuth von Moltke as the strategist and Count Albrecht von Roon as army organizer had prepared carefully this time for the fresh challenge. तो ये इन तीनों ने मिलके जो अभी इस बार की प्लानिंग की 1866 की, उसका आइडिया यही था कि ऑस्ट्रिया को किसी तरह से इंगेज किया जाए और ऑस्ट्रिया को इंगेज करके उसको टोटली जर्मन अफेयर से बाहर निकाल दिया जाए. So let's quickly look at the causes of wars. Particularly this war. क्या causes थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से they fought this war. The actual pretext was found by Bismarck in 1866 was a dispute over the administration of Schleswig and Holstein. ये दो areas थे जिनके ऊपर कंट्रोल के लिए बिस्मार्क ने या प्रूशिया ने इनके साथ ऑस्ट्रियंस के साथ थोड़ा सा इशू किया. ये एरियाज इन्होंने डेनमार्क से पकड़े थे in 1864. So Austria and Prussia, they seized these areas and they were controlling these areas. तो यहाँ से इनकी dispute शुरू हुई और जब यहाँ से वो शुरू हुई और उसके बाद end हुआ इनकी war के ऊपर. Second important thing was nationalism, जो कि cause था एक. पहला वो dispute थी उन areas पे, दूसरी थी nationalism. German nationalism became a potent force during this period. The aim of the most of German nationalists was the gathering of all Germans under one state. तो Germans को अपने आप को as a superior race वो मानते थे और they wanted कि जी बहुत सारी और भी nationalist जो हैं वो रहे हैं. For example, French हैं या उससे पहले Romans थे या जो भी थे. उसके बाद इनके माइंड में आया कि Germans जो हैं they are also a superior race and they must also rule. They must also establish their control.
तो जर्मन नेशनलिज्म जो थी दैट वाज वन ऑफ द इशू, जिसकी वजह से जो जर्मन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये प्लानिंग शुरू की कि देयर मस्ट बी अ यूनिफाइड जर्मनी, अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, ताकि वो दुनिया पर रूल कर सकें. सो इट वाज बिस्मार्क्स मास्टर प्लान. जो बिस्मार्क था उसका ये मास्टर प्लान था, had a master plan that resulted in this war. The North German Confederation and the unification of Germany was the idea behind, ताकि किसी तरीके से हम जर्मन्स को इकट्ठा कर सकें. Bismarck maintained that he orchestrated the conflict in order to bring about North German Confederation, the Franco-Prussian War, and the eventual unification of Germany. तो उसके आइडिया, उसके माइंड में ये तीनों चीजें थी कि किसी तरीके से जो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन है उसको किया जाए, ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर उसके बाद की जो जंग है वो, और तीसरा उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाएगी, यानी कि जर्मन यूनाइट हो जाएंगे. तो एक और इसका कॉज जो था दैट वाज फ्रेंच न्यूट्रलिटी. Bismarck was guaranteed French neutrality in the war, event of war. Italy was already allied with Prussia, तो प्रूशिया की अपनी पावर बढ़ गई और फ्रेंच को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया ताकि फ्रेंच जो है उनकी हेल्प ना कर सके ऑस्ट्रियंस की. तो इसमें हुआ ये कि ऑटोमेटिकली प्रूशिया की जो पावर थी दैट इंक्रीज्ड, which meant that Austria would be fighting both with no major allies of its own. अब ऑस्ट्रिया को लड़ना पड़ रहा है इटली और प्रूशिया के साथ, और इसका अपने कोई एलाइज नहीं थे. तो ऑटोमेटिकली जो इनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी प्रूशियंस की वो इंक्रीज हो गई. Bismarck was aware of this numerical superiority, but still he was not prepared to advise it immediately, even though he gave a favorable account of the international situation. अब वो थोड़ा सा कॉशियस होके चल रहा था. दूसरा बड़ा फैक्टर जो था जिसको हम कह सकते हैं कि कॉज भी कह सकते हैं कि जो कि जंग का बायस बना, वो ये थी कि प्रूशियन की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी या उनके जो वेपन एंड इक्विपमेंट थे वो उन्होंने इंप्रूव कर लिए थे पहले से, और दे आल्सो रीऑर्गेनाइज देयर मिलिट्री so they can quickly mobilize. So that was the one of the reason. Bismarck may well have been encouraged to go to war by advantages of the Prussian army against the Austrian Empire. तो उसके अंदर बहुत सारे जो मिलिट्री फैक्टर्स थे that played a role. For example, Prussian conscript service. Conscript service क्या होती है कि जब किसी मुल्क की पॉपुलेशन कम होती है और वो जंग की सिचुएशन में होते हैं तो वो तमाम जितने भी उनकी जो पॉपुलेशन होती है, जवान लोग होते हैं, उनको लाजमी करार दिया जाता है कि दे शुड सर्व इन द मिलिट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो कॉन्स्क्रिप्शन का जो सिस्टम प्रूशियंस का था उस तरह का सिस्टम किसी और का यूरोप में नहीं था. सो प्रूशियंस ने क्या किया, उनकी जो कॉन्स्क्रिप्ट सर्विस थी वाज वन ऑफ द कंटीन्यूअस ट्रेनिंग एंड ड्रिल इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑस्ट्रियन आर्मी. तो प्रूशियन की वजह उनकी जो लोग थे दे वर ऑलरेडी ट्रेन्ड कॉन्स्क्रिप्शन की वजह से, क्योंकि लोगों को वो भर्ती करते रहते थे, लोगों को ट्रेन करते रहते थे और वो उनके बंदे ट्रेन रहते थे, जबकि ऑस्ट्रिया का ऐसा सीन नहीं था, जिसकी वजह से प्रूशियन जो मिलिट्री थी दे वर रेडी एंड दे वर ट्रेन्ड, और वो बार बार एक्सरसाइजेस कर करके ड्रिल्स कर करके दे वर रेडी. सो प्रूशियन स्पीड ऑफ मोबिलाइजेशन वाज अनदर फैक्टर. Speed of mobilization is very important when you are conducting any military operation. Swift and quick mobilization can give you element of surprise against your enemy. तो यहाँ पे भी वो सीन था कि जो प्रूशियंस थे इनकी जो मोबिलाइजेशन थी इट वाज वेरी फास्ट, नंबर वन. नंबर टू, जो प्रूशियन आर्मी थी दे वर लोकली बेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स. उन्होंने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स बना लिए हुए थे एंड दे वर ऑर्गेनाइज्ड देयर, दे वर स्टेशन्ड देयर. और मोस्टली जो उनके रिजर्व लोग थे they lived close to their regimental depots and could be swiftly mobilized. यानी कि उनके जो रिजर्व के लोग होते थे उनको भी उन्होंने अपनी जो मिलिट्री की जो आउटपोस्ट होती थी उनके करीब करीब आबाद किया हुआ था. सो whenever they required any military force तो उनको क्विकली मोबिलाइज करके वो अपने पास ले आते थे और दुश्मन पे अटैक करते थे. तीसरा था स्पीड ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट. आपने अपनी फौज को टाइम पे डिप्लॉय करना है दुश्मन से पहले फॉरवर्ड फ्रंट के ऊपर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप फॉरवर्ड फ्रंट पे आ जाएंगे फौरन तो आपका दुश्मन जो है उसको टाइम लगेगा, आप जल्दी पहुंच के वहां पे डिफेंसेस कर सकते हैं. यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि द स्पीड ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रूशियन आर्मी वाज वेरी फास्ट. दे हैड अ वेरी डिटेल्ड यू कैन से और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का उनका रेलवे सिस्टम था, निजाम था, और जिसकी वजह से इट वाज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड देन विद इन द ऑस्ट्रिया. फॉर एग्जांपल प्रूशिया के अंदर उनका जो रेलवे सिस्टम था बड़ा जबरदस्त नेटवर्क था.
The more efficient Prussian railway network allowed the Prussian army to concentrate more rapidly than the Austrians. तो उनके अपने railway link की वजह से they could swiftly mobilize their forces to the border. Prussians have the advantage of being able to carry field army of 285,000 men over 5 railway lines and deploying them in 25 days, whereas the Austrians has only one railway line and it will take her about 45 days to assemble about 200,000 men. तो दोनों का कंपैरिजन आप देख लें. 25 दिन के अंदर they could deploy 285,000 men 25 दिन के अंदर, और 5 उनकी रेलवे लाइंस थी जिसकी वजह से उनको ये एडवांटेज था प्रूशियंस को, और ऑस्ट्रियंस की एक लाइन थी जिसकी वजह से उनको they could take 45 days to assemble. उसके बाद 2 लाख फौज, यानी कि 85,000 उससे भी कम ऑस्ट्रियन से. सो ऑटोमेटिकली एज किसको बना? और प्रूशियंस को. That was one of the reason जिसकी वजह से प्रूशियंस जो थे they quickly mobilized and they concentrated their forces on the forward line. चौथा जो बड़ा फैक्टर था मिलिट्री का वो ये था कि आर्म्स इक्विपमेंट एंड एडवांस टैक्टिक एंड स्ट्रेटजीज ये इन्होंने एक्वायर की प्रूशियंस ने. Prussian infantry were equipped with the Dreiss needle gun, a bolt action rifle, which could be fired faster than the muzzle loading Lawrence gun rifle of the Austrian army. यानी कि इनके पास जो गन थी वो जल्दी से रिफिल होके उसको फायर कर सकते थे, जबकि जो उनकी गन थी ऑस्ट्रियंस की वो उस तरह से क्विक नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया इन द आउटकम ऑफ द वॉर. So what was the strategy of the Prussians? By the alliance with Italy, Bismarck contrived to divert part of the Austrian forces to the south. इसने क्या किया कि इटली के साथ जो दोस्ती की, इन्होंने अलायंस किया, उसकी वजह से जो ऑस्ट्रियन मिलिट्री थी उसको उन्होंने साउथ में डिवाइड कर दिया. अब ऑस्ट्रियंस को साउथ में भी लड़ना पड़ रहा है और प्रूशिया के फ्रंट पे भी लड़ना पड़ रहा है. तो इटालियन के अगेंस्ट भी वो लड़ रहे हैं और प्रूशियन के, जिसकी वजह से दे गॉट डिवाइडेड और वो अपना एक फ्रंटल अटैक नहीं प्लान कर सके, जिसका फायदा प्रूशिया ने उठाया. This advantage, together with that of Prussia's modernized army discipline, resulted in a Prussian victory. Simple. तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिसने प्रूशिया की जो मिलिट्री विक्ट्री थी उसको पॉसिबल बनाया. The war was formally concluded on August 23 by the Treaty of Prague, और ये एक one of the reasons थी. The Austrian artillery had breech loading rifle guns which were superior to Prussian muzzle loading smoothbore cannon, but later Prussia ने भी ऐड कर ली. Prussia ने क्या किया कि Prussia later added new Karup breech loading cannons which played an important role in the outcome of war. तो ये जो guns थी they also proved very important and very significant when the war took place. And before the war started, both the Austrian and Prussian governments sought to rally allies in Germany, and automatically Prussia, as you can see in the blue line, they also acquired more and more allies, और जिसकी वजह से they consolidated their power, and automatically it proved to be very successful for them. So if you look at the forces size and losses, you will analyze that Austrian forces had about 500,000 plus number, and the casualties were more than 132,000, whereas the Prussian military had superior numbers. Numerically they were superior, 637,000, and their casualties were also less because of their superior strategy, because of their modern weapon and equipment, and because of their overall planning, quick mobilization, which proved to be very successful for the Prussians. So what happened after the Prussian victory? In order to prevent unnecessary bitterness, feeling, or desire for revenge, and prevent intervention by France or Russia, Bismarck pushed King William I of Prussia to make peace with the Austrians rapidly. The Austrians accepted mediation from France, Napoleon III, and they resolved this issue. तो आइडिया क्या था बिस्मार्क का? बिस्मार्क आइडिया ये था कि इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग ना किया जाए और जितनी जल्दी हो सकता है ऑस्ट्रिया के साथ निगोशिएशन करके उसकी डिफीट को एक्सेप्ट करो, उससे कंपनसेशन लो और अपनी डोमिनेंस को वहां पे एस्टैब्लिश कर दो. और जो किंग विलियम वन था प्रूशिया का, उसने बिस्मार्क के कहने के ऊपर जल्दी जल्दी ऑस्ट्रियंस के साथ पीस डील कर ली ताकि फ्रांस और रशिया वो कहीं ऑस्ट्रिया के साथ मिलके दोबारा प्रूशिया पे अटैक ना कर दें.
और ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी उसकी, जिसकी वजह से उसने डिवाइड एंड रूल खेला बिस्मार्क ने, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन दी सक्सेस, और उसके बाद उनको सक्सेस मिल गई। तो तीन चीजें हुई उसके बाद, जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ प्राग इन 1856। Peace of Prague resulted in the dissolution of German Confederation, which was controlled by the Austrians at that time. And second चीज हुई Prussian annexation of many Austria's former allies. उनके बहुत सारे जो एलाइज थे उनके ऊपर कब्जा भी कर लिया प्रूशिया ने, और अपना अंपायर उन्होंने ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया। एंड द परमानेंट एक्सक्लूजन ऑफ ऑस्ट्रिया फ्रॉम जर्मन अफेयर्स, तो ऑस्ट्रिया को जर्मन अफेयर्स में से निकाल के बाहर कर दिया, और ये तय पाया कि अब जितने भी जर्मन अफेयर्स होंगे उनको प्रूशिया कंट्रोल करेगा, प्रूशिया रूल करेगा। और यही वो चीज थी जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की तरफ एक रास्ता हमवार हुआ, और ऑस्ट्रिया जो प्रूशिया became so powerful that they could take on easily on the second French war against the French। तो फ्रैंको-प्रूशियन जो वॉर हुई उसके बाद वो इसी का रिजल्ट थी कि Germans under Prussia they became organized, they became powerful, और उन्होंने उसके बाद फ्रांस का भी मलियामेट कर दिया। So the treaty assigned Schleswig and Holstein to Prussia। ये जो जिन एरियाज पे मसला बना हुआ था वो एरियाज जो थे उन्होंने जर्मनी को, इसको प्रूशिया को दे दिए। The latter also annexed Hanover, Hesse Castle, Nassau, Frankfurt outright, of thus acquiring the territory that had separated the eastern and western parts of the Prussian state. तो बहुत सारे और areas जो थे, they were also became part of Prussia. So this was also a war dividend. By the Peace of Vienna, Austria ceded Venetia for transfer to Italy. तो इटली जो कि प्रूशिया का एलाई था उसको ऑस्ट्रिया ने एक एरिया वेनेशिया के नाम से भी ट्रांसफर कर दिया, तो इटली also became powerful. So basically Prussia's victory in the war enabled it to organize the North German Confederation, and it helped towards the unification of Germany. So this was very important. So let's conclude, guys. Prussia emerged as the dominant German force in Europe, which could unite Germans and consolidate its power. So this was the outcome of this war. Prussia became a dominant power, एक powerful state के तौर पे वो emerge हुआ, German force के तौर पे emerge हुआ, और उन्होंने अपने यूरोप के अंदर अपने आप को consolidate किया, मजबूत किया, ताकि आगे चल के फ्रांस को भी हटा के तो एक जर्मनी, एक imperial power establish की जाए, जिसमें वो successful हो गए। Austria's humiliating defeat allowed Prussia to annex many allies of Austria, और ऑस्ट्रिया के जो बहुत सारे एलाइज थे, उसकी जो बहुत सारे एरियाज थे, उन पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया, ताकि अपने जो एम्पायर है उसको ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट किया जा सके। Austria was totally sidelined in the European politics, especially in the from the German affairs. तो German affairs से भी उनको साइड पे कर दिया, और German affairs को, German की यूनिफिकेशन को, German को यूनाइट करने में now Prussia would be the leader। तो उन्होंने अपने आप को एक टॉप लेवल पे ले आया। The victory was another step towards the ultimate unification of Germany by Prussia। और प्रूशिया ने उसके बाद जितनी भी पॉलिसी की आपने देखा, उसके बाद की जो भी चीजें हुई उसके अंदर प्रूशिया became a dominant power and they actually consolidated Germans in Europe, और वो फिर उसके बाद काफी अरसे तक they remained powerful। और आपने देखा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया। So this was all about today. If you got any question, you can ask now. Thank you very much.